Yes. Who is the boss for monetary policy? And who's the boss for fiscal policy? Correct. Or you can say GOI or Finance Ministry. Clear? Government of India. I hope the share market part was clear with the primary and secondary market. Why to invest, when to invest, and what to invest. That was the next question. So that I will deal. Before that, the more important topic from a share market point of view is Stock Exchange Board of India. If there is a UPSC question, they may ask when SEBI was established, and that is 1988. It was established in the year 1988, and as a statutory basis, it got the autonomy or it got the statutory backing in 1992 through a Parliament Act. The head office is in Mumbai, and the regional offices are in New Delhi, Calcutta, and Chennai. Then it regulates and develops the capital market that you should know, and thereafter it also regulates the working of stock intermediaries such as stockbrokers, merchant bankers, mutual funds, and registered financial institutions, financial investment institutions. See, you might have seen there are some people who call themselves financial analysts. Who are they? They are nothing but they are these brokers who tell you whether to invest in which stock, whether to do the investment in this particular stock, in this particular mutual fund or not. SIPs हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अब होता क्या है, जो भी कंपनीज हैं, सभी कंपनीज दे नीड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए उनको इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? सो दैट दे कैन इंक्रीज व्हाट देयर बिजनेस. इंक्रीज बिजनेस से मतलब ये है, पहले 4 फैक्ट्रियां थी, अब 8 फैक्ट्रियां डालनी है और भी बहुत कुछ करना है. सो व्हाट दे कैन डू फॉर दिस, दे कैन डू 2 थिंग्स. पहली चीज है लोन और दूसरी चीज है इन्वेस्टमेंट इन देयर कंपनी. अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है? 2 तरीके से आ सकती है. एक तो शेयर है जो स्टॉक मार्केट के थ्रू वाला शेयर होता है, और एक है डायरेक्ट कंपनी में शेयर. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ये शेयर भी पार्ट ऑफ शेयर ही होता है, बट इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस. अब कंपनी क्या करती है, ओवरऑल अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ाने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए शेयर्स इशू करती है, और उन शेयर्स को कंपनी यूटिलाइज करती है. कैसे? थ्रू दीज फाइनेंशियल एनालिस्ट, ब्रोकर्स और थ्रू शेयर मार्केट. अब शेयर मार्केट के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे कंपनीज लिस्टेड होती हैं. फॉर से उस पर्टिकुलर डे की टॉप 30 परफॉर्मर कंपनी लिस्टेड है, या उस पर्टिकुलर डे की टॉप 50 का परफॉर्मर कंपनीज लिमिटेड, जो भी मैं बताऊंगा आगे आपको. सर्टेन मोर थिंग्स दैट आई टोल्ड यू. Now let's go back to the next point. That is the functions of SEBI. What are the functions it performs, and how these functions help the stock market to perform better at the same time. What it does, it improves or it promotes investors' education through different parameters and intermediaries, like promotes investors' education. You can also see after every mutual fund ad, you get an idea that mutual funds are subject to market risk. All these informations are given under the guidelines of SEBI by the private players of mutual funds and other services. They also prohibit the fraudulent and unfair trade practices. Sahara. You know the Sahara case? Sahara case में क्या था? It was a kind of chit fund scheme where Sahara is
shown some fake accounts worth of 25,000 crore. हुआ क्या, मामला मीडिया में आ गया, लाइमलाइट में आ गया. तो व्हाट सेबी हैज डन, सेबी हैज आस्क्ड देम कि जो आपके अकाउंट होल्डर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें, उनकी डिटेल्स दीजिए, उनकी फॉर्म डिटेल्स दीजिए. व्हाट सहारा हैज डन टू एस्केप दैट, सहारा ने भर भर के बोरियों में फॉर्म्स भेज दिए. अब हुआ क्या, सेबी ने रैंडमली कोई बोरी उठाई, उस बोरी में से 4-5 फॉर्म्स निकाले और उन चारों पांचों फॉर्म्स की जो डिटेल थी वो फेक थी. फेक फॉर्म्स. What this led to? This fake form led to the acquisition on Sahara. How you generated this 25,000 crore rupees, and you have to pay back. The Supreme Court has given a verdict, you can say, or given a rule on that particular case that Sahara has to pay back this 25,000 to the customers from whom he has taken the amount. अब वो केस चल रहा है मार्केट में. Then it also does the inspection. अभी सहारा वाला केस बताया, और भी चीजें हो सकती है, जैसे अडानी के केस में. अडानी के केस में सेबी इज डूइंग कि क्या उन्होंने शेयर के वैल्यू मैनिपुलेट किए हैं क्या, उसको लेकर के. दे आल्सो कंडक्ट इंक्वायरीज, दे आर कंडक्टिंग इंक्वायरीज इन दिस केस. They do the audit of stock exchange, that they are doing in this particular case, in other cases as well. Yes. What do you mean by the manipulating of the shares? For example, the value of your company share was just rupees 1,000. Through some manipulating way, you are quoting it rupees 1,300 or 1,500. That means you are showing overvaluing of your share in the market, and this can be done through different means. How it can be done? You have done a fake evaluation. You have forged some performance indicators, the valuation of company. So all these lead to providing some fake data to do what? To get excess benefit through shares. Are you getting it? अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था, the company can fix the value of their own shares. तो वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं कि ये लोग टाइम कर सकते हैं. There are certain parameters based on कंपनी की जो करंट कैपिटल है, कैपिटल से मतलब है जो कॉर्पस है कंपनी का, या जो वैल्यूएशन लगी है. फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कोई 25 करोड़ की कंपनी है, ठीक है. व्हाट दैट कंपनी विल डू, कंपनी विल डू दैट इन अगेंस्ट ऑफ दिस वैल्यूएशन कि मेरे को कितनी वैल्यूएशन बढ़ानी है. हैव यू माइट हैव सीन शार्क टैंक. इफ यू सी शार्क टैंक, it's a very good show to understand different startups and other things. When you watch Shark Tank, what happens? A company comes whose total value is rupees 5 crore. What it gives? It gives an offer like for 10 crore of investment, what they are giving? They are giving 3% of the shares. So 3% of what? 3% in the total valuation of the company. For example, 10 crore for 3%. So with 55 into 10, if we'll do 10 crores, if the much share you want to, if you want just 3% of the share, you just have to invest what? 10 crore rupees. But for say company required 25 crore rupees, and for 25 crore rupees, how many percent of share is required there? Almost 7.5%. So for 7.5%, how much you need to give? 25 crore. So what it will do? कंपनी की टोटल वैल्यूएशन कितनी हो गई अब? 30 करोड़ की हो गई. Out of that, the shareholding is of a company is 7.5%. For example, कुछ fraudulent activities के through what they do is वो 5 करोड़ को 30 करोड़ दिखा दें. So definitely when they will issue an IPO, they will issue an IPO based on this. Clear? वैसे you need not to go into much details, you just know the functions.